Okay, so let's continue our previous video and we are talking about custom providers. We have covered a lot. अब इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइडर में बात करते हैं. वैल्यू प्रोवाइडर में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ए टोकन एंड जो टोकन का वैल्यू होगा दैट इज नॉट ए क्लास, दैट कैन बी जस्ट अ स्ट्रिंग, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट. So this is also possible. We provide a string token and the value can be just a plain JavaScript object. Okay, like db URL is an injectable token and its value can be a string, can be an object, can be a function, right? Like this. So here this is also a way of creating a injectable tokens. So I'm creating an injectable token database name cron config. Cron config has the value object and database name has a value which it is going to inject is anything. A string can be anything. So these are value providers. You are providing a token with the value. So here let's replace them. And here we are just accessing database name. जो आप अगर उसको inject करोगे, so you can directly access the value using this dot name, this dot config and all. So these are called injectable tokens. So just like here we are injecting like this: inject database name, inject cron config, and the values are being populated using db name and the cron. Now the next thing we can talk about is the factory provider. So I think we have discussed all. Now here this is also, you can see the connection is a token and this is a factory provider because it is again dependent on another value. So sometimes provide and use value when you already have the value, like database URL which you already have getting from the env. Let's say this database URL is coming from config module, some another config service. तो उसके लिए आपको कनेक्शन फैक्ट्री बनाना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड डेटाबेस कनेक्शन बट आई डोंट हैव द वैल्यू. आई नीड टू गेट इट फ्रॉम कॉन्फिग सर्विस, कॉन्फिग मॉड्यूल. जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है तो इसको बोलते हैं. सो दोज काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज फैक्ट्री. आई मीन कनेक्शन इज इंजेक्टेबल टोकन बट आई डोंट हैव इट्स वैल्यू राइट अवे. आई ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अनदर प्रोवाइडर टू गेट द वैल्यू. तो उसके लिए आप फैक्ट्री प्रोवाइडर यूज कर सकते हो. और यहीं पे असिंक फैक्ट्री प्रोवाइडर भी हो सकता है. अगर आप इस फंक्शन को यूज फैक्ट्री को असिंक अवेट में कन्वर्ट कर दो, दैट विल बिकम असिंक प्रोवाइडर. सो हियर आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस एग्जांपल इनटू द सेम आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फिग सर्विस डॉट गेट, और ये कॉन्फिग सर्विस इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द कनेक्शन टोकन विद द डेटाबेस यूआरएल, बट माय डेटाबेस यूआरएल आई डोंट हैव इट. आई नीड टू गेट इट फ्रॉम कॉन्फिग सर्विस. यहाँ पे कॉन्फिग फैक्ट्री है. So use factory is actually a arrow function, I mean the function. So you can do some calculation, you can even write a sync await, you can inject another provider inside it and get the value from there. So factory provider use करना जहाँ पे we don't have the value right away and we wanted to get the value, so you can use the factory provider in that case. So guys, this is all about all the custom providers: factory provider, class based provider, non class based provider, alias provider, value provider. बट या ओवरऑल ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. थोड़ा ट्रिकी है बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स.